an alternate material for the steel. They are game changer in such scenarios. This product has a durability of more than 80 years. तो इसका अगर आप मार्केट वैल्यू अगर आप देखेंगे लगभग आपके 10 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ का आपका वैल्यू हो गया पर एनम on which is solely for solving steel rebar corrosion in India. Outside India, there is a lot of opportunities. More than 80% of it is being exported. This product actually emits 79% lesser carbon emissions per meter. Mumbai Metro, MMRDA, they have also used the GFRP as a material. Especially in metros, they use it for tunnel concrete structures. एक अवेयरनेस लेवल नहीं रहा है इसका जिसको हम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं. दोस्तों, GT लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है. मैं आपका होस्ट अनुराग बाजपेयी और मेरे साथ में आज के गेस्ट सौरभ बांटिया. सौरभ, वेलकम टू द शो. Thank you so much for having me. Thank you. Saurabh, we understand that you are managing director of Shinestar FGC, Fiberglass Composite. Apart from what you are at this point of time, maybe I think we are also interested to know your past experiences. We understand that you have been done your undergrad from Boston College in Bachelor of Science. You have done your MBA from IIM Kozhikode. Maybe I think share some more with our experiences, with your experiences with our guest, so that we can know more about you as well. So मेरा जो education and childhood थोड़ा unconventional रहा है to say the least. Come from a family from Rajasthan, born and brought up in South India in Coimbatore. And after my schooling, I went to the US. Usually people do their masters, but went for my bachelor's in the US. वहाँ पे 4 साल के लिए मैंने पढ़ाई की थी, mostly in management, finance and analytics. थोड़ा कंसल्टिंग का काम किया, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, उसका मेरे को काफी एक्सपोजर मिला था उस टाइम में. बट समथिंग कॉल्ड मी बैक. आई वांटेड टू कम बैक एंड मेक एन इम्पैक्ट इन माय होम कंट्री. एंड दैट टाइम, you know, like 2017, there was a huge discussion about India becoming the next big superpower and growth happening. So something urged me to come back. So I came back and I joined this very interesting company called Social Corps. It is now changed into Atlin, which is a data science firm. But at that point, it was primarily into helping decision makers in government and NGOs to become more data driven. तो उस टाइम में मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग काम रहा था कि मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किया जहाँ पे आई वुड बी एबल टू ट्रांसलेट scheme data, for example, into insights for members of parliament or people in government. So वो experience मेरे लिए काफी formative था क्योंकि that was my first job after completing my college. And during that time, I got to understand how sustainability functions, how people think about sustainability, and most importantly, how you can translate complex things like data and insights into stories that you can explain to your audience. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने करीबन 1 साल वहाँ पे काम किया था. I got to work on a project which was launched by the Prime Minister called the Disha Dashboard, which was basically integrating 40 different national schemes into one dashboard and helping decision makers make better decisions. So वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था. And then I decided to sort of, my father was planning to retire, so I came back into the family business. Worked there for a year, and then I decided to do my MBA. And this was right before COVID. So मैंने मेरा MBA complete किया in 2022, and then before joining back, I was into AI and tech consulting. So I had got placed after my MBA into a company called Graminar. And वहाँ पे basically मेरा role था in a similar role, but for different sort of clients in pharma and retail. But the core concept was same: taking data and insights from data and explaining it in a simple manner to decision makers. For example, अगर मैं Colgate की sales कोई गुजरात में देख रहा हूँ, तो how can I ensure that
I know the modern trade sales and the retail sales and the secondary sales all in a holistic manner to take decisions based on the data. So I used to help people do that. So that was my core role. And then something really interesting happened, which basically led me into this particular role. Is that my brother had joined the business, and हमारा जो पुराना business था वो पूरा construction में था. It was entirely into supplying construction in southern states, and that's when we came across this product for the first time. Fiberglass or GFRP बोलते हैं, so glass fiber reinforced polymer. तो ये प्रोडक्ट का जब हम लोग ने हमारे जो कोर कस्टमर्स थे फैमिली बिजनेस के, उनको जब हम लोग ने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, द रिस्पॉन्स वाज फिनोमिनल। क्योंकि लोग देख के ऐसे चौंक जाते थे कि ये क्या है, मतलब इतना लाइट वेट है, इतना स्ट्रांग है, जंग नहीं पकड़ता है। जंग इतना बड़ा इशू है हमारे साउथ में, स्पेशली तमिलनाडु एंड केरला में, कि हर कोस्टल रीजन है अपना ह्यूमिडिटी बढ़ता है। तो बोले कि ये तो एकदम लाजवाब प्रोडक्ट है, इसको डेफिनेटली वी नीड टू इम्प्लीमेंट। So that's when I was still working for my in my previous role, but I saw the excitement of this product and I decided to study a little bit more about it. And that's when I realized कि ये जो product है, जो FRP बोलते हैं, it's actually an incredible product. हम लोग इसको super material बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही lightweight है, हमारे helmets में use होता है, ships में use होता है, but इसका जो पर कैपिटा कंजम्पशन आप देखेंगे, यूएस में 11 केजी पर कैपिटा है, चाइना में भी 2.5 केजी पर कैपिटा है, बट इंडिया में इट इज जस्ट 0.3 केजी। तो दैट्स इट, इट्स वेरी लो। तो this seemed like an amazing opportunity, and it's a confluence of अलग-अलग different factors कि corrosion का issue हमारा बढ़ रहा है, labor का issue बढ़ रहा है, cost बढ़ रहे हैं labor के। तो ये lightweight material है तो easily use हो सकता है, and plus sustainable भी है। तो ये सारे factors को देख के I decided to sort of leave my job and get into this full time. And I've basically fell head over heels over the product. And it's been almost 2.5 years since I've been involved with this product, and it's been an amazing journey. We've been able to take this product to over 1,000 customers in the past 1.5 years. तो हमारा आइडिया क्या है कि we don't want this to be restricted to infrastructure या कुछ बड़े builders को हम लोग ने प्रोडक्ट दिया. We want this to go to the grassroots. तो हम लोग ने पूरा डीलर नेटवर्क सेटअप किया कि 20+ डीलर हम लोग ने अपॉइंट किया अलग अलग स्टेट्स में। और इसका हम लोग ने, जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे कस्टमर्स, एक आदमी अगर अपना तिरुनेलवेली में अपना 2 तले का घर भी बना रहा है, तो वहां पे भी हम लोग ने उसको सप्लाई किया है मटेरियल कि वो इसको यूज करके देखे। तो हमारा कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन हु इज इन दिस स्पेस कि वी वांट टू इंश्योर ग्रास रूट डेवलपमेंट हो इसका। तो उस बेसिस में एंड वी स्टार्टेड डूइंग, एंड वी सप्लाइड टू ऑलमोस्ट 600 पिन कोड्स इन इंडिया, and we've covered 24 states or in India where we supplied material, be it 5 rolls or 6 rolls or small quantities. People are trialing it out, but our vision is to create a mass movement, mass awareness हम लोग को लाना है। And I think somewhere मेरा जो past रहा है in terms of being able to convey something complex into something that makes sense for the end person is coming into a lot of help here. Very nice. अगर कोई किसी को अगर हम बोल रहे हैं कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ डबल है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि मजबूत है ज्यादा। तो उसको हम लोग कैसे कन्वे कर सकते हैं? तो हम लोग ने सोशल मीडिया पे काफी कैंपेन्स किए। तो सोशल मीडिया में वी गॉट ओवर 4 million व्यूज, एंड नाउ वी आर the most followed fiberglass company in the entire world. We have more than 25,000 followers on Instagram and YouTube combined. So it's been a very amazing journey. I think I'll take an example because मुझे लगता है कि जो retrofit component है वो because of the जो legacy material है उसमें बहुत सारे challenges हैं. For example, in Noida there is a society which is named as Rail Vihar. It's a cooperative society based housing society. और उसमें क्या है कि सौरभ, it's a group housing project जिसमें लगभग यू कैन इमेजिन द डिटोरिएशन सिचुएशन। 10 से 15 साल पुरानी एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें कि 500+ कॉलम्स होंगे, ऑलमोस्ट 250+ कॉलम्स, उसमें क्रैक्स विजिबल हैं। विद इन 250+ कॉलम्स में 100 कॉलम्स
के आसपास दे आर वेरी सीवियर कंडीशन. Oh, And the wow. reason, you can imagine, I'm talking about not 50 years old cooperative society Hmm. or group housing Hmm. project, just 15 years old. इसका मतलब है कि उसकी लाइफ साइकिल तो अभी लगभग पूरी हुई नहीं है। पूरी नहीं हुई है. Hmm. And this is one thing which is important to address is the water quality. Yes. है ना? क्योंकि एक बार अगर वो डिटोरिएशन शुरू हो गया एंड द योर reinforcement is exposed, certainly there is a challenge. The challenge इस तरह से भी है कि द यूज दो RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि हम इसको डिमोलिश करके नया बनाएं या हम इसको रिट्रोफिट करें, एंड दे आर कंसल्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस and other research firms as well in this area. Hmm. The alternate material which you are mentioning, Saurabh, I think they are game changer in such scenarios. May not be suitable at this point of time, but how do you feel the research activities? For example, whenever there is a new product, particularly from the application side, एक अप्रीहेंशन हमेशा रहता है स्टील रिइंफोर्समेंट को रिप्लेस करके अगर एक GFRP रिइंफोर्समेंट आता है, इट इज नॉट इजी टू Definitely not. एक्सेप्ट Definitely बाय not. द कंज्यूमर. मैं मान चलता हूँ कि हम लो राइज बिल्डिंग्स में ये वाला प्रोडक्ट अभी विद ऑल द मे बी स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी रिसेप्टेबिलिटी या एक्सेप्टेंस अमंग द यूजर्स इज नॉट इजी. Yes. तो जनरली क्या है कि उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो है कि रिसर्च सफिशिएंट है क्या, Hmm. है ना, रिसर्च हुई है, उसके बाद क्या गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को फुलफिल करती है क्या. तो आई अंडरस्टैंड कि फॉर GFRP बेस्ड रिबार्स एक IS 18 to 56 स्टैंडर्ड को मीट करती हैं और उस Hmm. हिसाब से बनती हैं. Hmm. तीसरा कंपोनेंट है कि डिमॉन्स्ट्रेशन के, Hmm. वेदर वी हैव इनफ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स और नॉट. Hmm. Hmm. ऑल्टरनेट मटेरियल के लिए ये 2-3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं फॉर मास एक्सेप्टेबिलिटी. Yes. तो अभी इसका जैसे आपने बताया कि यू हैव लॉट ऑफ मे बी आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क Hmm. प्राइमरली अभी साउथ में ही है. Hmm. बट व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस दैट यू हैव सीन अमंग द यूजर्स, जब क्योंकि आप यूजर के साथ बातचीत करते हैं, Hmm. तो उनका बेसिक में भी आई थिंक 2 3 4 5 apprehensions क्या हो सकते हैं, which Hmm. we want to understand. I think the example you raise is a very powerful one. Mhm. एंड हमारे साउथ में भी कुछ एग्जांपल्स रहे कि चेन्नई में फॉर एग्जांपल 17 स्टोरीज के 3 टावर्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा का पूरा मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था डिमोलिश करने के लिए ड्यू टू द एग्जैक्ट सेम इशू व्हिच यू मेंशन्ड व्हिच वाज फ्लोराइड इंड्यूस्ड कोरोजन. सेम थिंग कोची में भी एक आर्मी वेलफेयर सोसाइटी का प्रोजेक्ट था दैट वाज ऑलमोस्ट 19 और मोर देन 19 स्टोरीज के 4 टावर्स 9 टावर्स थे. They had to be demolished. So Yeah. this is something which is occurring quite a bit. And relating to your point about acceptability, mindset, consumers ka, the good thing about this product is that it's not a new product. ये काफी पुराना प्रोडक्ट है. इसका यूजेज हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं 1960 से. Wow. और इसका जो पहला ब्रिज बना था वो 1994 में बना था इन द US बाय अ कंपनी नोन एज कोडियाक. एंड वो ब्रिज का 2015 में जब इसका रिसर्च चेकिंग किए थे उसका स्ट्रेंथ का, तो इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. देयर वर नो स्ट्रक्चरल डैमेजेस, देयर वर नो इश्यूज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो एंड वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो अबू धाबी का जो F1 सर्किट है वो इसी प्रोडक्ट से बना हुआ है. अच्छा. ज्यूरिक का जो एयरपोर्ट है उसके रनवेज इस प्रोडक्ट से बने हुए हैं. तो इट इज अ टेस्टेड एंड हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जो अपने बोल सकते हैं जो यूज हुआ है. एंड वर्ल्ड वाइड इट हैज बीन यूज्ड इन द बुर्ज खलीफा आल्सो फॉर मेनी यूज केसेस. तो इट इज नॉट अ न्यू प्रोडक्ट. इट हैज बीन यूज्ड इन मेनी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस. एक अवेयरनेस लेवल नहीं रहा है इसका जिसको हम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं. And coming to the point of customer का feedback and mindset, सबसे पहला चीज ये प्रोडक्ट का है कि इसका दिस इज अ वेरी माइनर थिंग बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसका प्रोडक्ट का नाम टेक्निकली बोलते हैं GFRP, which is basically glass fiber reinforced polymer. It is 70 to 80% glass fiber और around 20% is a polymer based resin. अपना epoxy resin हो गया, vinyl ester resin हो गया.
बट इसका क्या है, लोग इसको बोलते हैं GFRP, मतलब ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक का जो कोनोटेशन है, इट इज पीपल हैव लॉट ऑफ इश्यूज विद कि ये प्लास्टिक का सरिया है, इससे टूट सकता है अपना बिल्डिंग, इसको थोड़ी ना यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो हम लोग ने वो पी हटा दिया। वी कॉल इट फाइबर ग्लास कॉम्पोजिट। इट इज अ कॉम्पोजिट मेड ऑफ फाइबर ग्लास। 80% इसका फाइबर ग्लास है। एंड फाइबर ग्लास, जैसे मैंने बोला, इट्स अ सुपर मटेरियल, इट इज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मटेरियल। तो पहले चीज हम लोग ने किया, हम लोग ने इसका नाम चेंज किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग GFRP, यूज FGC, so that people don't feel the connotation with plastic is not there, because it is not a plastic based material, it is a fiberglass based material. दूसरा चीज है कि हाउ डू यू कन्विंस, आई कैन नॉट कन्विंस कि आप अपना मतलब पूरा घर इससे बना लो, या इसके सर्टेन मतलब आप 4 तले या 5 तले या 6 तलों के कंस्ट्रक्शन आप इसके साथ कर लो। सो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने कस्टमर्स को काफी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस प्लस लोकली यूज्ड एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स दिखाए कि किसी ने अपने फ्लोरिंग में यूज किया है, किसी ने अपने बीम में यूज किया है, किसी ने अपने सनशेड्स में यूज किया है, जहाँ पे पानी का प्रेवलेंस ज्यादा है या कोई फ्लैट एरिया है जहाँ पे आपको बड़े बड़े एरियाज कवर करने, लाइक इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, वहां पे कुछ और एडिशनल फैक्टर्स आ जाते हैं दैट मेक द प्रोडक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू यूज। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग जो एप्लीकेशन है, हमारे जो फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब वो अपना VDF फ्लोरिंग करते हैं या जॉइंटेड स्लैब फ्लोरिंग करते हैं, तब नीचे वो लोग रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। तो वो रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आप 12 मीटर का नॉर्मल TMT बार यूज करते हैं जो 8 mm का आता है। तो वो 12 mm का अगर आप TMT बार यूज कर रहे हो तो उसको आपको स्ट्रेटन करना पड़ता है, उसका ओवरलैप कॉस्ट रहता है, उसका लेबर कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। तो ये प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल यूज भी है कि ये 100 मीटर के रोल में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसके कारण क्या है, आप मतलब बड़ा अगर आपका लॉन्ग स्पैन एरिया है, अगर फ्लोरिंग है आपका, तो आप सीधा इसको खोल के ले कर सकते हैं, तो आपका ओवरलैप कॉस्ट बच गया एंड लेबर कैन ऑल्सो कंप्लीट द वर्क मच फास्टर। So practically speaking, when you talk about these aspects, not just ki, it is a new material, it is non-corrosive, but practically you save on your labor cost, you save on your material cost, you save on your transport cost, because आपको कम ये करना पड़ता है। तो ये benefits जब हम quantify करते हैं कस्टमर को और बताते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है फ्लोरिंग का, आपको 7 दिन लग रहा था, अभी आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, तो उसका अगर आप सोचेंगे कितना सेविंग हो रहा है, तो when we try to explain to the customer the practical benefit of it, they tend to convince themselves. And since it is a low risk application, they feel like okay, what is the worst that can happen? तो उस बेसिस पे हम लोग ने we have started onboarding customers, and right now majority of our customers are using it for flat long span applications like ground slab हो गया, grade slab हो गया, अपना इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग हो गया, ये सारे यूज केसेस में प्राइमरली यूज करते हैं। स्टील बिल्डिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। तो that is how we are starting initially to get that adoption and that interest in the market. Now the next phase is what we are trying to go, where we go into more bigger structures, that we have supplied to projects where entire G+1 house was made using this material in Kerala, in Bangalore, but those were like structural engineers who had their own mindset on designing it. But that is the natural next step, that once you start using it in certain areas, you understand the material properties, then you go on to the next stage. तो सौरभ, एक तो है कि जो प्रेफर्ड लोकेशन है, विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर पॉइंट, दैट प्रेफर्ड लोकेशन इस तरीके के मटेरियल के लिए जो कोस्टल बेल्ट है, जहाँ पे वाटर या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज एक बार अगर आपका स्ट्रक्चर में जो रिइंफोर्समेंट है, स्टील रिइंफोर्समेंट, अगर वो एक्सपोज्ड है तो उससे सडनली उसका जो करोजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये इस तरह का ऑल्टरनेट मटेरियल होगा विच इज FGC, तो इसमें वाटर का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म लाइफ इन एनी केस। उसके अलावा भी जैसे वन पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड कि स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करता है, आज के समय में छोटे से लेकर के बड़े बिल्डिंग तक सब में मोस्टली स्ट्रक्चर इंजीनियर लोग यूज करते हैं, है ना? मतलब even if it is 1000 square feet as a home, small home, people tend to use the structure engineer ताकि वो
जो उसकी 50 साल की लाइफ है वो चले। यस। ज़्यादातर केसेस में क्या है कि जो वाटर कंटामिनेशन है इन डिफरेंट लोकेशंस, फॉर एग्जांपल नोएडा और जयपुर और इस तरह की जो सेकंड टियर, थर्ड टियर सिटीज़ हैं, ज़्यादातर सिटीज़ बिल्ड भी ऐसी हो रही हैं या हुई हैं कि आपका एक सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पे लोग रहते हैं, सराउंडिंग में देयर आर सर्टेन डेडिकेटेड लोकेशंस जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ सेटअप भी हैं। हुँ, हुँ, इंडस्ट्री सेटअप के कारण वाटर कंटामिनेशन इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द वाटर हुँ। वो भी हो रहा है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना? पॉइंट। तो और कई सारी जगह पे ऐसा भी है कि ग्राउंड वाटर लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, व्हिच हैज़ लॉट ऑफ दीज़ सल्फर और टीडीएस बोलते हैं, टीडीएस है। डिसॉल्व सॉलिड्स। हाँ, डिसॉल्व सॉलिड्स हैं और हुँ, जब कंस्ट्रक्शन उससे होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वाटर वही यूज़ कर रहे हैं जो कि बाद में उस करोजन इंड्यूस करेगा उस स्टील में। और वो चैलेंज कैसे मीट करें, एज़ ए स्ट्रक्चर इंजीनियर तो ये वाला जो पार्ट है वो तो मिसिंग रहता है। हुँ, दे जस्ट डिज़ाइन इट बेस्ड एग्ज़ैक्टली। ऑन द आईएस कोड्स, हुँ, बेस्ड ऑन द मे बी आई थिंक सॉइल हुँ, स्ट्रेंथ, और उसके बेसिस पे जितने फ्लोर की बिल्डिंग है, क्या मतलब आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, हाइट क्या है, उसके बेसिस पे वो डिज़ाइन कर देता है। हुँ, बट वाटर क्वालिटी एंड द लोकेशन इन जनरल इज मिसिंग। लोकेशन यस। फिर भी हो जाती है बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड कि कोस्टल रीजन की जो बेल्ट है, हुँ, उसमें सॉइल की स्ट्रेंथ डिसाइड हो सकती यस, है। या। बट वाटर जो यूज़ हो रहा है उसके लिए कौन ज़िम्मेदार हुँ, होगा और हुँ, हाउ दिस मे बी आई थिंक प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड। यू मेंशन्ड कि अवेयरनेस एक इश्यू यस, है ना? या। तो ये भी अवेयरनेस वाटर शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर डिजाइन कंपोनेंट देन। यस, हुँ, दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट आपने जो रेज़ किया है एंड दिस इज़ अ कॉमन थीम वी सी ऑल द टाइम हुँ, हुँ, कि कस्टमर अगर आके बोलता है जब हम कोरोजन के बारे में बात करते हैं, तो सब यही बोलते हैं कि कोरोजन तो कोस्टल एरिया में होता है, हुँ, सी के पास में है, हुँ, आपका सी सॉल्ट आता है। फिर देन व्हेन वी एक्सप्लेन टू देम द क्लोराइड इंड्यूस्ड कोरोजन जिस हुँ, पॉइंट ने आपने हुँ, बोला कि फैक्ट्रीज़ का जो रेसिड्यू होता है, वो हमारे ग्राउंड वाटर में आता है एंड हुँ, इन काफ़ी एरियाज़ लाइक बैंगलोर फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इतना हो गया है कि दे हुँ, आर ड्रिलिंग 2000 और 3000 फीट डीप डाउन इनटू द ग्राउंड ओह! पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हुँ, अब ये पानी है हज़ारों साल पुरानी। हुँ, इसमें ना जाने क्या टाइप के मतलब हमारे सॉलिड्स हो सकते हैं। हुँ, उस पानी को अगर आप लेके इफ यू आर डूइंग इट इंटो कंस्ट्रक्शन, इट मेक्स इट वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू ensure that the reinforcement is protected. हुँ, हुँ, And I would like to say that वी आर वेरी वेरी गुड एट प्रोसेस हुँ, हमारे कंट्री में विद द वे वी फॉलो द प्रोसेस द कोड एंड स्पेशली व्हेन आई पर्सनली टॉक टू स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स वी हैव एक्सट्रीमली टैलेंटेड structural engineers and हुँ, people who understand how to do structural analysis हुँ, and buildings and all of that. हुँ, But there is, I feel, a growing disconnect between design, structures, and like the way we do it theoretically and हुँ, practically on ground में क्या हो रहा है. हुँ, हुँ, And no one is willing to take the raise accountability for it. या, अगर मैं एक बिल्डर हूँ, हुँ, मैं बस यही बोलूँगा कि जो भी रिकमेंडेशन मेरे को मिल रहा है इंजीनियर से और इट इज़ नॉट फीजिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड इन मेनी सिनेरियोज इट कैन बी नॉट प्रैक्टिकल एंड नॉट फीजिबल. मेक I cannot follow everything to the T to the point where there is cost pressure and commercial pressures as a builder. हुँ, And at the same time, the engineer will just say कि मैंने ये recommend किया था, ये हुँ, हुआ नहीं है, so it हुँ, is not my concern. हुँ, But there needs to be a middle ground, हुँ, a solution where both the stakeholders come together and sort of hash out some way out of it. हुँ, Now, what I personally feel, and especially talking to a lot of people within the concrete community, हुँ, हुँ, and I don't want to sound like कि मैं बस product का advertisement कर रहा हूँ हुँ, इस basis पे. हुँ, As a citizen and as someone who is really concerned about the quality of our buildings, there are way too many variables that can go wrong when हुँ, you're doing construction. हुँ, जैसे आपने वाटर क्वालिटी का चेक बोला था, इट इज़ नॉट जस्ट दैट, देयर हुँ, इज़ आपका वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या है? हुँ, अगर आपका कंक्रीट आपके आरएमसी प्लांट से आपके लोकेशन तक हुँ, अगर बीच में ट्रैफिक जाम में भी फँस गया, हुँ, उस उतना अगर एक्स्ट्रा क्यूरिंग हुआ, दैट कैन आल्सो इम्पैक्ट योर स्ट्रक्चर. So ओह! these small हुँ, small things you have to keep in mind हुँ, when you're doing your construction. So I feel it is not, definitely we need to have more checks like what you said about water quality and all of that. हुँ, But I feel it is not feasible to cover all these bases हुँ, because materials are changing. We are switched from OPC to PPC.
रिवर सैंड से एम सैंड में हम लोग ने स्विच कर लिया है। ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग इज नॉट सफिशिएंट। जो आदमी मतलब सालों से ओपीसी के साथ काम कर रहा है, अचानक से उसको बोलोगे आपकी पीपीसी में आपको 20 दिन या 21 दिन तक आपको क्यूरिंग करना है, वो नहीं समझेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट। सो why we are why we feel this product is necessary is because it is a middle ground. आप you can design it with it, and at the same time it is adapting to the reality of construction ki your ratio might be low, the worker might not cure it properly, or the water might contain chlorides, and all of those factors can be tackled with this sort of a product. That is why we feel that this is a more, many people think it is impractical to use this. Yeah. But our challenge is that this is actually more practical than what is happening right now. So that is our core thesis, and what we are trying to do is make it very easy for the engineer to implement it. Very nice. One more point, Saurabh, I just want to highlight. हम लोग ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का भी काम करते हैं एज ए कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. In such projects, there is also the advocacy for using STP water, sewage treatment plant. कई ये भी एक कंपोनेंट है जो कि शायद अवेयरनेस का हिस्सा होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ हार्डनेस और बीओडी सीओडी लेवल या स्पेसिफिक कंटेंट क्या है उस का होना चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्शन में जो वाटर यूज हो रहा है, बहुत सारी जगह दिल्ली में तो आप एसटीपी वाटर ही यूज करते हैं प्राइमरली, और तो उसके लिए भी एक इनफ अवेयरनेस नहीं है. लोगों को लगता है एसटीपी किसी भी ग्रेड का हो वो यूज हो जाएगा. Yes, this is again a very critical point आपने जो रेज किया है. There is my understand, and this is what I have read in the news, is that when issues of water quality have come up in construction, for example, in Bangalore, when the BMTC had they made an announcement ki you need to use treated water when you are doing your construction. But ये treated water का definition उन्होंने नहीं बताया कि what does treating the water mean. So people just take the STP water that is there, and they call it treated water, and then they use it in the construction. But what is very important is IS Indian codes के हिसाब से आपका chloride level needs to be less than 500 milligrams per liter. But if that is, and many times, especially in inland cities where like Delhi and Noida, it is up to 6 times that limit. तो इस नंबर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसकी प्रैक्टिकलिटी इज अ क्वेश्चन बिकॉज मैं रिसेंटली न्यूज में पढ़ रहा था कि अ वेरी मेजर बिल्डर इन गुड़गांव, टू इन ऑर्डर टू डू दिस जो आप बोल रहे हैं कि पानी को प्योरीफाई करके क्लोराइड कंटेंट कम करने के लिए, दे हैड टू इन्वेस्ट ओवर 200 crore rupees in a water treatment plant. And they are a luxury builder, they can afford it, they are selling flats. उनके 2 फ्लैट का खर्चा होगा, 3 फ्लैट का खर्चा होगा for that. But for a normal builder, mid-scale builder, how practical is that to actually have that RO treatment plant in their location available? So we need to find more different solutions, is what I would say, for this water part of it. सर, अब कुछ मार्केट साइज की बात कर लेते हैं, है ना? Sure. जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में रेट्रोफिट मार्केट साइज लगभग मेरे ख्याल से 2024 में 180 बिलियंस का था, इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, एंड इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, मे बी आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10% CAGR. Yes. It means that by 2030 it will be reaching close to maybe 500 to 600 billion dollars, which is a huge market. And then such opportunity will be much more in terms of जो स्टील है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी. जितना भी रिइंफोर्समेंट कंपोनेंट है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, क्योंकि जितना रेट्रोफिट मार्केट बढ़ रहा है उसके साथ साथ नया मार्केट भी बढ़ रहा है. Yes, exactly. तो और जो बिल्ड हुआ है उसको चेंज भी होना है, करोजन के कारण भी चेंज हो रहा है, लाइफ साइकिल कारण नया बनना है, डिमोलिशन है, नया बनना है. व्हाट इज इन योर अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह के जो अल्टरनेट मटेरियल है, बिकॉज इट इज अ मोर और लेस इट इज एन अल्टरनेट मटेरियल फॉर द स्टील, राइट? जहाँ पे हम लोग बार यूज कर रहे हैं, स्टील बार, वहां पे हम लोग इस तरह के मटेरियल को एटलीस्ट in some context use कर सकते हैं. Yes. We may not be using such bars, FGC bars,
शायद हम जहाँ पे लॉन्ग पिलर टू पिलर वहाँ पे ना यूज कर पाए, या जहाँ पे हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वहाँ ना यूज कर पाए, but still there are a lot of opportunities where we can use alternate material like this. Yes. From your understanding, can you explain a bit to our listener कि अगर हमें let's say total जो steel requirement है, which is also getting higher और year on year basis, अगर हम alternate material और use करें like this, तो कैसे हम लोग इसको, कितना market size हम आज देखते हैं, कितना शायद हम 2030 तक देखते हैं? Yes. Some roadmap. Yeah, this is a good point. तो मैं दो फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला फैक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू मेनी रेप्यूटेड एक्सपर्ट्स, in per year we spend around 5% of our GDP on repair and rehabilitation in the country. This is proportional to the growth rate of GDP also. And वो 5% of GDP में 50 to 60% of the spend is simply on steel rebar corrosion. तो इसका अगर आप मार्केट वैल्यू अगर आप देखेंगे, लगभग आपके 10 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ का आपका वैल्यू हो गया पर एनम, on which is solely for solving steel rebar corrosion in India. So that in itself is a massive In number. billions, how much it would be? It will be around, I think around $200 billion 200 billions, or so, yes. Something like approximately. this, My math might be wrong, Yeah, but it is just an approximate number. So this is what we spend every single year on फिक्सिंग स्टील रिबार करोशन। और अगर इसको आप कंपैरिजन के लिए देखोगे, हमारा हेल्थ केयर एंड एजुकेशन का जो बजटेड स्पेंड है, इट इज दिस नंबर इज 5 times of that. It is healthcare and education budget is around 2 lakh crore rupees, and here you're spending 10 to 12 lakh crore rupees on just fixing the past instead of building your future. So the issue is massive. And this is the first fact, the size. And in general, if you see the steel rebar market or the steel market in India is around 52 million metric tons per annum, which comes to around 60 lakh crore rupees, if I'm not mistaken. Please don't quote me on that. But it's a massive market. So what we are trying to target is 30% of this, or areas where basically low areas where the corrosion is an extremely high concern. For example, अगर आप सी शोर में buildings बना रहे हैं, वहाँ पे आपको definitely this has a very good use case. अगर आप water containing water tanks बना रहे हैं, swimming pools बना रहे हैं, या आप building का कोई भी exposed area बना रहे हैं, जैसे balcony बना रहे हैं, या आपका sunshade बना रहे हैं, जो जिसमें पानी का काफी access है, that entire section would be around 30% of all the use cases is what we are expecting. In the next stages, we would look for more adoption and more usage. But as a blanket principle, we can design any structure using this material. इसका already worldwide code है, international building code भी है, ACI American Concrete Institute का code भी है, and Canadian code भी है. तो डिजाइन करने के लिए we can design it. We can design any sort of structure, long span, जैसे आप बोल रहे हैं, या बड़े height के buildings, we can design it. The only challenge becomes economics, क्योंकि इसका although इसका tensile strength ज़्यादा है compared to steel, इसका modulus of elasticity is different. So keeping that in mind, we might have to change the design. But what is practically feasible is around 30% of this market is our assumption. जो कि इस तरह के जैसे water submerged, Yes, या water below the exposed or externally exposed concrete structures. वहाँ पे तुरंत इसको Yes. use किया सकता है. Yes, yeah. That is a very good component. So one point, Saurabh, you have mentioned in the starting that maybe 0.3 kg per capita is the usage at this point of time of such material here, right? And outside India, there is a lot of opportunities, and the Yes. market size is fairly big. Now, coming to the tariff component, when we look at the tariffs, certainly the export market is the influenced market. और जहाँ पर भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ डोमेस्टिक मार्केट में इसका यूसेज कम है, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका यूसेज बेस्ड ऑन द डिमांड अगर ज्यादा है तो यू टेंड टू एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट, है ना? इट इज प्रीटी नॉर्मल. तो डू यू सी दैट सच material which are alternate material may not be consumed fully because of less awareness in the Indian market, but they are in demand in the, let's say, European market,
जहाँ अभी रिसेंटली EU डील हुई है, या जहाँ पे जैसे यूएस मार्केट में 50% की बजाय अब 18% है, it means that it may open some gates for the alternate materials like you are manufacturing. Yes. What is your view on this? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो करेंटली अगर आप देखेंगे इस प्रोडक्ट का सप्लाई चेन इकोसिस्टम जो है, फाइबर ग्लास FRP जो बोलते हैं, फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, Polymer. it's actually quite sophisticated. It is not in its infancy, but more than 80% of it is being exported. So earlier when we weren't manufacturing this product, when we were trading with it, what we realized is there are many factories that make this material, but they all export it to the West and Europe and US and all of that. So there is definitely, when the 50% tariff was introduced, it was a huge blow to the manufacturing industry of this. But with the new EU trade deal and other things coming in, we definitely would like to, we might be seeing some better adoption of the material. And I want to clarify that there are two categories of products with FGC. एक तो हमारा रीबार है, जो रीबार कंक्रीट रीइंफोर्समेंट में यूज होता है। दूसरा हमारे प्रोफाइल्स है, जो बेसिकली हमारे स्टील ट्यूब्स हो गए या राउंड ट्यूब्स हो गए, चैनल्स हो गए, जिससे अपने शेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग होता है यूजिंग द सेम कंपोनेंट, ऑल्दो द रेशियो इज डिफरेंट। उसका मार्केट काफी बड़ा है यूएस में। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द 0.3 नंबर, इट इज इंक्लूडिंग बोथ रीबार्स एंड प्रोफाइल्स। तो उस यूएस एंड यूरोप में इसका जो मार्केट है, इट इज क्वाइट बिग एंड मैसिव, एंड इट्स अ कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट इन केमिकल फैक्ट्रीज एंड एरियाज वेयर there's a lot of acid exposure. So we do see the tariffs sort of playing a big role, and the removal of tariff as well. हम लोग ने personally, we have, and I'm a very I want to focus on the Indian market and change because this is where the growth is happening, right? So there's a chance of creating something unique, but we are definitely exploring exports as well, and I think the new EU deal which has come in is very, very promising, because with very low tariffs on exports to those countries, we hope to see more growth of exports in this sector as well. Associated to this, as a follow-up question, sort of, whenever maybe I think such export requirements are there, there are always maybe I think more compliances with respect to the carbon emission. Yes. They're also there. I'm sure, like, whenever the organization or manufacturing organizations like yours, when they intend to have the export, there are certain compliances which are maybe I think less or more than what we have in the domestic market. They being met as well. Like US, they have certain requirement. EU has a CBAM, carbon border adjustment mechanism. CBAM, there's a requirement for the emission which you do as a maybe scope 1, scope 2, scope 3, all in total. इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए द ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स, हाउ मच दे आर प्रिपेयर्ड, तभी शायद वो अपॉर्चुनिटी अपने आप में जो हम लोग देख रहे हैं वो फुलफिल हो सकती है. दैट इज वन थिंग. Second follow-up question will be done later, but I think you just want to understand the first in terms of the preparation. That is definitely something we are. So right now we haven't explored Europe as a market yet, but definitely when we will be exploring it, we will be taking that into consideration. The on a larger point, I would say, comparing it to the alternate, which is steel, this product actually emits 79% lesser carbon emissions per meter. क्योंकि this is 4 times lighter compared to steel, and on a per kg basis also it emits less emissions compared to steel. तो आपका 80% अगर carbon emission reduce हो रहा है per meter, then automatically it is something that needs to be taken seriously into consideration when exporting. And regarding the specific regulations with exporting to Europe, we are not fully. I am not fully aware of it yet. I will need to maybe read more about it and sort of implement it. So, since you have mentioned the specific carbon emission component, Saurabh, there is one green taxonomy which Ministry of Steel has recently released, which talks about कि एक particular, let's say, ton of finished steel अगर produce करने के लिए जितना भी tons of CO2 emission की requirement है, उसका उन्होंने
एक इंडेक्सिंग सी रिलीज कर दी है यस। कि 1.6 से नीचे है तो 1.6 टन्स ऑफ CO2 एमिशन पर टन्स ऑफ फिनिश स्टील से नीचे होगी तो ये कैटेगरी, ये रेटिंग लेवल होगा। मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो 2.2 टन्स ऑफ CO2 एमिशन पर टन्स ऑफ फिनिश स्टील का बोला गया है। वो कैटेगरी अगर होगी उससे नीचे की तो वो ग्रीन स्टील कैटेगरी में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ, हाँ। पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर सौरभ, ज्यादातर जो रिसाइकल्ड स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, वी टेंड टू से दैट दे आर सेकेंडरी स्टील बट प्राइमरली दे आर रिसाइकल्ड स्टील मैन्युफैक्चरर। यस। तो उनके केस में क्या करते हैं, उनका जो ये जो नंबर है ग्रीन टैक्सोनॉमी का, दैट कम्स अराउंड मे बी आई थिंक 0.6 0.7 0.8 आल्सो बिकॉज दे डोंट मैन्युफैक्चर द न्यू स्टील, द वर्जिन स्टील। उसके केस में आप, मुझे लगता है कि जो नंबर आप बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन पर टन्स ऑफ फिनिश्ड दिस rebar compared to their number is almost same. Still they'll have an edge. What is the, maybe I think the plus point that still you see for this, so that people can still prefer this alternate material compared to the recycled steel? One is embodied emission, which we were discussing earlier, and आपने भी बताया regarding the secondary steel. And second is the life cycle emission. So when you look at the embodied emission of it, even if the embodied emission of the product is maybe equivalent compared to some of the alternates available in the market, the life cycle emissions are much lower क्योंकि ये product आपका 4 गुना lighter है। तो जो trucks आपको लगेंगे for the same 10 tons of material for example, if you're taking 20 tons of steel for a particular project, you will need maybe 4 trucks. You can get the same quantity in a single truck. तो वो आपका transport emission कम हो गया। Got it. आपका मैन पावर का रिक्वायरमेंट वो तो कम आपका हो ही रहा है। एंड द अदर बेनिफिट इज दैट इट इज अ मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं यूजिंग सेकेंडरी स्टील एंड इफ इट due to some reason if it corrodes within 25 to 30 years, there is a rebuilding emission that happens. This product has a durability of more than 80 years. So it has 4 times the more lifetime life cycle duration compared to steel. So it is not just the embodied carbon aspect but also on the life cycle aspect which we will have to look at. And on the life cycle side as well, the cycle of construction, reconstruction, pollution gets reduced when we use this material. So on that angle also, if you look at it, the emissions reduce quite a bit. तो लाइफ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लाइफ कितनी है? So इसका there is something known as an Arrhenius test बोलते हैं। With Arrhenius test वो एक common test है in which basically they accelerate the life of the concrete to over 100-120 years and then they test the durability of the material. So उस test में इसको अलग-अलग environment में test किया गया कि बहुत high temperature हो 60 degrees plus या बहुत ज़्यादा alkaline environment हो या बहुत ज़्यादा acidic environment हो। इन सारे environments में the product has passed all of those tests. And in fact, the tensile strength is reduced only by 20% when being exposed to such a high concentration of external things for a long duration of time of a 100-year or a 120-year test. So durability के मामले में this is a very very long-lasting product which once you have utilized, you don't have to worry about any sort of replacement happening. I have recently, I think, gone through one information that not Delhi, but I think Mumbai Metro, MMRDA, they have also used the GFRP as a material. Where exactly they have used this? Yeah, so there are multiple applications of this. For the rebar, especially in metros, they use it for tunnel concrete structures. तो उनके जो लॉन्ग स्पैन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे ये प्राइमरीली यूज होता है एंड शटरिंग में भी यूज होता है। तो जैसे चेन्नई मेट्रो में भी ये प्रोडक्ट यूज हुआ है। तो जो वॉल पैनल्स या कुछ वर्टिकल शटरिंग होते हैं उनमें एज अ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड।
So a big application of this is in aluminum shuttering, जो माइवान कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसमें जैसे आपने कॉलम्स एंड बीम स्टील से बना लिया, और जितने भी वॉल पैनल्स हैं उन सब में ये रिबार का यूज करके हम लोग ने पैनल्स में कंक्रीट फिल किया है। तो दैट इज द मेन तो एप्लीकेशन। पैनल्स जो वो मतलब जस्ट टू गिव द शेप, यस, है ना? यस, और एग्जैक्टली, या फिर उसको जो है वो फिर से यूज कर लेते हैं यस, अलग-अलग बिल्डिंग्स यस, में। एग्जैक्टली। बट अगर इतना सब कुछ सही है तो व्हाई इट इज नॉट अ प्रैक्टिस व्हिच इज मे बी आई थिंक वेरी फास्ट रेप्लिकेबल? क्यों कोस्टल एरिया में ऐसे कुछ नॉर्म्स आ जाएं? स्टील यूसेज इन जनरल जो है वो इट इज वेरी कॉस्ट इंटेंसिव, यस, or it's very costly compared to maybe I think the alternate material like this FGC and the let's say secondary steel versus primary steel. What is the cost deviation or difference? Some ballpark figure. This is again a great question, and this is one of the few sustainable materials which is actually competitive on price. यूजुअली आपने क्या होता है कि एक ग्रीन टैक्स बोलते हैं कि, एंड काफी बिल्डर्स भी ये चार्ज करते हैं कि मैं मेरी बिल्डिंग में ग्रीन मटेरियल यूज कर रहा हूँ, तो यू हैव टू पे मी एक्स्ट्रा 20% और 30% so that I can recover the cost that I've done on that. This is one of the few sustainable materials which is actually cost competitive. क्योंकि सर्टेन एरियाज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग ले रहे हैं, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ा है, तो you can do a substitution. You can go for a 6 mm rod instead of an 8 mm in that particular structure. So when you do that, you actually end up saving more than 40% on your reinforcement cost. And on a like-to-like basis also, your cost reduction is anywhere between 15 to 30%, depending on the application, the reinforcement, and things like that. So it's what to say, it's a rare combination of being both sustainable and cost-effective as well. Okay. One more aspect, सौरभ, जब हम लोग स्टील बार या इस तरह का मेटल प्लेट्स की बात करते हैं, तो वन थिंग इज ऑलवेज क्लियर कि उसकी अपनी ओल्ड कॉस्ट भी है। सो मतलब जैसे बाय ऑल मीन्स अगर आप देखें तो नॉर्मल स्टील जो यूज हो चुकी है उसकी भी कॉस्ट मार्केट में 50 से 65 रुपए के आसपास होगी, है ना? आज के टाइम में पर केजी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें तो एक रिसाइकल्ड कॉस्ट अवेलेबल है, बट व्हाट अबाउट दिस मटेरियल? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड। तो इसमें देखेंगे तो रीसेल मार्केट बोल के नहीं है फॉर द प्रोडक्ट। देयर इज नो रीसेल मार्केट फॉर इट एज सच, बट इट इज रिसाइक्लेबल। तो ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो अपना ग्लास फाइबर है, इसमें जो ग्लास फाइबर है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अप टू 5%। तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप सीमेंट का जो किल्न होता है जिसमें सीमेंट बनता है, उसमें भी एज एन एनर्जी सोर्स वी कैन यूज दिस मटेरियल। सो देयर आर वेज टू रिसाइकल द मटेरियल, बट देखिए एवरी मटेरियल हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। स्टील डेफिनेटली हैज अ वेरी robust ecosystem and has a resale value. In this product currently there is no resale market for it, although when seeing structures, अगर आप इसका product अगर आप निकालेंगे, it is definitely reusable, because there is very little damage that happens to it after it is put into concrete. So it is reusable and recyclable, but it does not have a resale market as such. But over the period of time it is expected to have a resale market? Maybe, might be. बट अगर वो प्रोडक्ट आपको मिल जाए यूज्ड प्रोडक्ट, देन यू कैन Yes, you can that we can do. So we are in the early stages of doing some sort of a recycling program as well. कि हमारे फैक्ट्री में जैसे एक्सेस मटेरियल जो हो गया, उसको हम लोग ने कंक्रीट एडिटिव में ऐड कर लिया, या वी कैन गिव इट टू सीमेंट फैक्ट्रीज हु कैन यूज इट फॉर फ्यूल बर्निंग. इट आल्सो हैज सम एप्लीकेशन इन ब्रिक्स एज वेल. So there are many areas of research for recycling which we are currently looking into. ओके। सौरभ, जब प्रोडक्ट्स नए होते हैं, नए का मतलब है कि नया नहीं है ये प्रोडक्ट, बट इन द यूसेज इट इज रिलेटिवली वेरी वेरी लेस। Yes. तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इंस्टीट्यूशनल है कि नहीं है, Yes. है ना? Yeah. अगर वो लेट्स से तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी का जो शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसमें इस तरीके का रिबार का स्पेसिफिकेशन मेंशन है कि नहीं है। एक बार वो मेंशन होता है तो शायद इन जनरल जो रिक्वायरमेंट है ऑफ सच मटेरियल दे will always
लुक इनटू इट, यस। है ना? तो वो या। चीज़ भी आ जाती है। दूसरा है कि जो लेट अस से मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर फैटर्निटी है या जो कम्युनिटी है, उसको कैसे इस मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी और उसके लिए उनको कन्विंस कैसे किया जाए? सो देयर आर 2 क्वेश्चन्स इन दिस। मे बी आई थिंक वी विल गो वन बाय वन। Yes, हुँ, great, very pertinent points raised. तो अगर आप गवर्नमेंट की देखेंगे तो ये प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हुँ, हुँ, तो सबसे बड़ा इसका जो इम्पेटस आया था हैपेंड इन 2019 हुँ, हुँ, when just before COVID and during COVID there was huge structure price volatility हुँ, हुँ, with steel. हुँ, हुँ, तो उस टाइम में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हुँ, हुँ, श्री नितिन गडकरी जी थे, हुँ, हुँ, he got introduced to this product and he was a champion of it. या, And he tried to introduce the product, get the tests done from reputed institutes, हुँ, हुँ, and the reports were passed, and then India introduced the first BIS code for this in हुँ, हुँ। 2023. दिस That was दिस वाज़ 18256। 18256 हुँ, हुँ, जो बोला, that हुँ, was a landmark moment. हुँ, Like हुँ, that was a moment where there was some recognition for this product for हुँ, utilization in concrete reinforcement. हुँ, हुँ, So and it when it so when you look at government, there are two layers. One is central and another is state. हुँ, हुँ, तो central government में आप देखेंगे तो like I said, NHAI and Nitin Gadkari have been big supporters of the product and have tried to include it in many applications for highway projects, in हुँ, drains, crash barriers, and things like that. हुँ, The Indian Road Congress also has launched a guideline, हुँ, IRC 137 बोल के, हुँ। जिसमें आप पेवमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, आरसीसी रोड्स डिजाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज गाइडलाइंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज व्हिच वी कॉल इट एज़ अ मोर्थ, यस। उन्होंने अपने यहाँ पे जो इस तरह का रोड यस। ब्रिजेस इसके यस। स्ट्रक्चर में इन उसने डाल इन दिया है। स्ट्रक्चर्स में यूज करना शुरू कर लिया है। श्योर। एंड स्टेट वाइज देखेंगे तो इट इज स्टिल क्वाइट स्कैटर्ड। हुँ, हुँ, कुछ स्टेट्स में एसओआर में आ गया है, कुछ स्टेट्स में एसओआर में नहीं आया है। सो फॉर एग्जांपल कर्नाटका में हुँ, एसओआर में द प्रोडक्ट हैज बीन मेंशन्ड, हुँ, हुँ, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, but in Tamil Nadu, as far as I am aware of, it has not been introduced. So हुँ, but it has been used in the Chennai Metro project, which is हुँ, a separate entity. हुँ, So it is क्या बोलते हैं, बिट्स एंड पीसेस में इसका अप्रूवल हो रहा है। हुँ, अगर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ joint effort done by some sort of a entity हुँ। to sort of uniformly do it across all states in India, it will be very beneficial for easy adoption. तो जहाँ पे जैसे आपने बताया कर्नाटक एसओआर में है, Hmm. वहाँ पे डिड यू see the demand for such material is higher? Let's say Uh, in a this was year or very 2 years? recent. I Very think recent. around 3 months back, I saw it being mentioned, हुँ, but still think awareness is not there yet. हुँ, हुँ, Although it has been included, हुँ, that awareness factor is still not there. हुँ, And kind of relating to your second question या, regarding awareness, हुँ, that is, I think, one of the biggest challenges that we are facing currently, and it is something that we seriously need to look at. हुँ, हुँ, So what we are trying to do here is we are taking a very engineering and structural engineering first led approach. हुँ, कि हम engineers को जाके we show this product, give it the explain the material properties, हुँ, and give them support and tools to हुँ, make the decision and choice. For example, we are working on a platform right now where basically आपका कोई भी अगर structural diagram हो, हुँ, उसको आप upload कर सकते हैं, एंड इसके जो कोड्स हैं ACI 440 या हुँ, कैनेडियन S806, हुँ, इन कोड्स के बेसिस पे वो आपको ट्रांसलेशन दे देगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेड स्लैब कर रहे हैं हुँ, तो वो ग्रेड स्लैब का डिजाइन ऑटोमेटिकली वो टूल रीड करके आपको बता देगा कि इसका शॉर्ट स्पैन में आपको कौन सा GFRP का रीइंफोर्समेंट करना है, लॉन्ग स्पैन में कौन सा करना है, हुँ, आपका कितना कॉस्ट पड़ रहा है, क्या सेविंग्स हो रहा है, कितना एमिशंस कम हो रहा है। हुँ, तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट factors that can come as an output. हुँ, So that way, it makes it very easy for someone who is planning to implement it in their project, that they हुँ, don't have to do everything from scratch. हुँ, They can, whatever current existing steel designs they have, हुँ, we can translate it very easily into this and do it. वेरी गुड। So हुँ, we are हुँ, working on that right now. हुँ, बिल्डिंग्स कोड में इसका इंक्लूजन है? इंडियन कोड में अभी तक नहीं है। नहीं है। हुँ, इसका जो वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट है, जो हुँ, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें देयर इज़ अ क्लॉज़ व्हिच हैज़ अ लॉट ऑफ कैविएट्स हुँ, हुँ, मेंशनिंग दैट जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की कंसर्न है, वहाँ पे
you can refer to specialist literature which can be used to design the structures. तो IS 456 में ये क्लॉज डेफिनेटली दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी एरिया में ड्यूरेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो आप दूसरे लिटरेचर को रेफर करके डिजाइन कर सकते हैं. रेफरेंसिंग दी गई है. Yeah, reference, they have given the reference that you can use specialist literature. तो वो टर्म से अगर आपको ACI का कोड यूज करना है या कैनेडियन कोड यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं. ACI मतलब अमेरिकन काउंसिल इंस्टीट्यूट. अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट. Concrete Institute. From the awareness point of view, Saurabh, maybe I think I have a question. For example, when you look at the buildings and when you look at the infrastructure, there are two different people who decides the maybe building materials. In case of buildings, the architect defines, and then the structure engineer design. Right. I'm talking about only the structure component. Whereas in case of infrastructure, certainly the structure engineer define and design the infra component. For the buildings, who do you feel that they are the better bet for making the maybe such applications usage? It's a chicken and egg problem. अगर आर्किटेक्ट को आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तो इंजीनियर विल नॉट बी इंटरेस्टेड, बट आर्किटेक्ट विल से go talk to my engineer. So we have to approach both. We have to approach both the architect to explain and the person who is holding the financial budget for it to explain to them that okay, this is the reason why you need to invest in it. So then they will say ki I cannot take the call, refer me to your structural engineer. So then we go to the structural engineer and then we explain to them regarding the product and things like that, and we try to get the approval. So it is both. We cannot directly go to the engineer because the engineer will say कि मेरे customer को interest नहीं है. Got it. And we cannot just say the customer कि sir आप ये लगा दो. They'll say कि you have to go to the structural engineer. So it's a two-pronged process. We have to approach the end consumer, convince them that this is something that makes sense from an ROI perspective to at least look at. And then when they express interest, we go to the engineer and then we explain to them that these are the areas where we recommend using it. ठीक है. So Saurabh, second last question ये है कि when we look at the domestic market, there is a new carbon market is also coming up. So Bureau of Energy Efficiency and the Ministry of Power, they are also designing this market. It is going to get launched this year primarily. At this point of time, there are hard to abate sectors जो कि अभी identify किए गए हैं, but voluntary market will also be there. है ना? तो जैसे for example अगर इस तरह के मटेरियल जो ऑल्टरनेट मटेरियल FRP या GFRP मटेरियल्स हम लोग रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में या एक्सप्रेसवे में यूज कर रहे हैं, whether we have the defined MRV available when these infrastructure projects use this material, whether they can avail the carbon credits either domestic market or from the international market. Do we have this mechanism available? My understanding is that it is currently not available right now, and we have explored onboarding the material onto such marketplaces for carbon credits, but it is significantly expensive to do that. So right now in this current stage, my understanding is it is not available. But we definitely, it is something that we should be looking to implement in the future. So as personally as a company, what we are trying to do is we are trying to do third party LCAs and life cycle assessments for the product to sort of certify it from a third party's perspective. And we've also worked with institutes like IIT Madras who are doing a similar exercise to sort of get that that calculation right. And once that is done, we will plan to approach it formally to be added as a for the carbon credits. But these are the alternative material which are really good. Are they, let's say, Green Pro certified or any eco label certification? Yes. Also? So we did approach the Green Pro certification team. What response we got from them was that they don't have a framework yet for evaluating a new material like this. They had something for TMT and steel bars. So when we tried to register under that name, we got a response from them stating that it may not be applicable to that. So I think it is still evolving. We'll have to be we'll have to educate all of these bodies like IGBC and Green Pro regarding this particular product. So yeah, we'll require support from stakeholders like yourself as well to take it forward and sort of create the structure around it. It's still very early days right now, but
we are very hopeful. Very nice. Great response. So we have a rapid fire round also, Okay. Saurabh. Okay. So it means the short question, short answer. Sure. So the first question is Boston College versus IIM Kozhikode. Which one is your pick? I am Kozhikode. AI consulting or factory floor? I would say surprisingly factory floor. Uh-huh. After this, factory floor. Steel, recycled steel versus GFRP. I think that's an easy answer. GFRP. Biggest myth about manufacturing of such products in India? Manufacturing that quality cannot be maintained, or there might be some ghapla in the manufacturing. But there are, if you manufacture it in the right manner, the quality is always good. Data or faith? Which one helps the user to adopt such material? In India, I would say faith. One advantage of GFRP nobody discusses. How it improves the life of the laborer. A laborer who uses this product, when he uses steel, he burns his hand many times. Yeah. He carries a 12-ton a rod which is so heavy, and he lays it on the ground. So many times I've heard people say they have to take leave for 2 days a week because of the physical strain with it. So for the laborer who is working so hard on the ground, and with India facing such a huge labor shortage, people will not be preferring to work in such a intense environment. So this particular product, you have to use gloves to ensure that there are no scratches from it. But it is so much easier and benefit. What I like the most is when I go to sites and I see the people who are working on it and talking to them, they all have a smile on their face that, this work which used to take me so long, I'm able to complete so fast, and I don't have that physical strain. So that's an underrated benefit of export or domestic focus. Although you mentioned domestic. Yes, I in am 2030. yeah, So- yeah. Definitely, I think starting domestic, but definitely going to export. And most underrated infrastructure material. I would have to say seawater. If we are able to use this product in concrete, it unlocks the usage of seawater. Yeah. Because chlorides are not a concern. Yeah. Imagine हमारे world के natural resource में only 2% of total water is fresh water. Yeah. And instead of spending so much on purifying water, RO part, or taking fresh water from lakes and reducing what is available to the public, why not use seawater for using this? It sounds radical, but there are already a lot of tests being done where that might actually be a new building material that we'll be able to use. One sustainable habit that you have adopted for yourself recently. Sustainable habit. I recently purchased an EV. So all my travels I try to do using my EV. And I also try to calculate how much carbon emissions I save during my travels. So that's my sustainable habit. Last question, Saurabh. Recently, I have gone through one report. In India, in general, the legacy businesses are not being joined by the second or third generations. What has changed your mind in terms of joining the parental business? This is a very personal question, but what I feel many times what happens is that there is no. What excited me is the vision for the future that was created with this product. So what is very important, especially in second gen entrepreneurs or people who want to join the family businesses, there needs to be a vision for the future which is very well defined and is very exciting for them to join in. Right now, especially people who have been exposed to the external world, unless and until they feel that their contribution can help achieve that specific vision, it becomes like कि ठीक है, they don't want to carry on the status quo. अगर मेरे ये बिजनेस चल रहा है तो फिर मेरे को बस वो कंटिन्यू करना है. It's not something that's exciting. Many of the second gen entrepreneurs that I talk about, many of them, for example, अगर t-shirt का business है, they start their own brand. Yeah. So that vision is very important, and either they build it themselves or the parents or the owners of the current business, if they're able to give that direction, it would help the second generation to be more interested in growing in that route. Very good. I think it's a great message to the next generations as well. That whatever has been built, they need to maybe I think refine and redefine it. Yes. To make it a better business. Yeah, and I think
It's not easy. Like It's very it's tough. very tough, and especially when it comes to like when you join. So for me, like being in strategy consulting and talking to Fortune 500 clients, and then going into a factory floor where it's difficult to even communicate in English with people was not easy. Yeah. But what really helped me was sort of really एक बोलते हैं ना अपनाना कि ये मेरा है, this is mine. Like not being, a lot of people talk about nepotism and कि you know कि पापा का business ले लिया. Instead of thinking like that, thinking कि this is an opportunity for me, being grateful for that opportunity given and building that relationship and then taking it forward. That mindset needs to be there. And try to, instead of being frustrated कि things are not the way it used to be, think about कि how can I make things the way it needs to be in the future. So that's been my mindset in my role and a learning that I've had. And I think I have to credit my father a lot क्योंकि I am doing things in such a different way from the way he is doing it, but he has been a very big staunch supporter कि you know like whatever you decide, you know, like go ahead with it. So that's been a big blessing for me. Very I know nice. it was a rapid fire, but the answer became a bit long. No, thank you so much. You are such a great sport, Saurabh. Thank you so much for sharing a lot of knowledge, My pleasure. experiences, Yeah. and examples from this. We wish you the very best for bringing such product to the market. I'm sure like this will fly like anything. Yes. And Thank you. thank you so much once again. Thank you so much everyone for your patience listening. If you want to connect to Saurabh, we will be mentioning Saurabh's LinkedIn ID in our channel description. And if you want to have any specific suggestion for us in terms of the next guest, you can write to us at social@greentree.global. And please like, share, and subscribe. Thank you so much, everyone. Thank you, Saurabh, for joining us. Thank you. And I want to thank the GT Log team for organizing such an amazing podcast. I've seen some of your episodes. The topics are very pertinent. And you found a new subscriber. Thank you. Thank you so much. Thank you.